Assalamu alaikum children. Yesterday we learned some new terminologies from our topic life cycles of animals and plants. Life cycles of animals and plants. You know, today what we have to do? Today I will tell you the story of life cycles of animals and plants. But look here, you can see different pictures here. Wow, beautiful small kittens and few plants. और यहाँ पर आप देखें एक बटरफ्लाई जो है उसका पूरा लाइफ साइकिल भी है. अभी आपको इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा स्टोरी टेलिंग के अंदर, ठीक है? सो डू यू वांट टू लिसन दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी? आर यू रेडी? ओके, फाइन. सो ऑल लिविंग थिंग्स reproduce themselves. जितनी भी जिंदा रहने वाली चीजें हैं वो अपने आप को दोबारा क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं. All living things reproduce themselves. All living things die after some time. और जितनी भी जिंदा रहने वाली चीजें हैं वो कुछ अर्सा के बाद मर जाती हैं. All living things die after some time. But before they die, they produce babies. That's why living things don't just vanish from the planet. यही वजह है जिसकी वजह से living things कभी भी इस planet से हमेशा के लिए खत्म नहीं होती. That's why living things don't just vanish from the planet. Whether they are a single cell living thing or giant whales. An animal or plant will disappear if they are stopped reproducing. तमाम के तमाम जानवर, तमाम के तमाम प्लांट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें. All animals or plants will disappear if they stop reproducing. Having babies is one of the qualities that make living things different from non-living things. यानी कि छोटे छोटे बेबीज होना जो है वो लिविंग थिंग्स की एक क्वालिटी है जो उनको डिफरेंट करती है. किससे? नॉन लिविंग थिंग्स से. हैविंग बेबीज इज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. सो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन टू डिफरेंट वेज. Asexual production and sexual reproduction. Now first, asexual reproduction. Asexual babies have only one parent. They don't have two parents like humans. जो asexual babies होते हैं उनका सिर्फ एक parent होता है. उनका parent इंसानों की तरह दो नहीं होते. Asexual babies have only one parent. They don't have two parents like humans. The baby looks just like her mother. Baby जो है asexual में वो बिल्कुल अपने मदर की तरह, कोई उसमें change नहीं होता. The baby looks just like her mother. Even after millions of years, these kinds of animals and plants look the same. इसी वजह से लाखों सालों के बाद भी ये तमाम जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो देखने में बिल्कुल सेम होता है. इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स दीज काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लुक द सेम. Asexual reproduction is very fast. Many babies are born in a very short time. A single individual can produce many offsprings. Asexual is common among plants. ये जो asexual है ये plants में बहुत ज़्यादा आम बात है. Asexual is common among plants. It is important as plants are producers and a large quantity of plants is needed to feed the consumers. Asexual babies are very adaptive to their own environment. They adjust to their habitat easily. But asexual babies cannot survive in a different environment.
यानी कि जो एसेक्सुअल बेबीज होते हैं वो कभी भी किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ सरवाइव करते हैं अपने हैबिटेट के अंदर. इन अ न्यू प्लेस दे वुड बी डाई क्विकली. किसी भी नई जगह पर ये फौरन जल्दी से मर जाता है. इन अ न्यू प्लेस दे वुड डाई क्विकली. Different ways of asexual reproduction. Binary fission. Asexual babies are born in different ways. In some, the asexual mother is divided into two parts. In other words, the mother is divided into two daughters. यानी कि इसमें क्या होता है कि वो जो मदर है वो आगे डिवाइड हो जाती है टू डॉटर्स में. इन अदर वर्ड्स द मदर इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर्स. इट्स कॉल्ड बाइनरी रिप्रोडक्शन. इसको कहते हैं बाइनरी रिप्रोडक्शन. इट्स कॉल्ड बाइनरी रिप्रोडक्शन. बाइनरी मीन्स टू. मल्टीपल फिशन. In some situations, the asexual mother is divided into many different tiny babies. कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो एसेक्सुअल मदर है वो डिवाइड हो जाती है बहुत ज्यादा डिफरेंट छोटे छोटे बेबीज के अंदर. In some situations, the asexual mother is divided into many different tiny babies. These babies look like their mother. ये जो बेबीज हैं बिल्कुल अपनी माँ के जैसे लगते हैं. These babies look like their mother. They adapt to their own environment quickly. The babies grow up and reproduce in the same manner. इसी तरह से ये बेबीज बड़े होते हैं और फिर वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल सेम मैनर में. The babies grow up and reproduce in the same manner. In a short time, there are many of them in that area. It's called the multiple reproductions. Multiple means many. Now, budding. Look at this way of asexual reproduction. It's called budding. यहां पर आप देखें, ये एक asexual reproduction है और इसको क्या कहते हैं? इसको budding कहते हैं. Look at this way of asexual reproduction. It's called budding. In this method, a bud appears on the body of the mother. The baby separates from the mother and becomes independent. Fragmentation. Another type of asexual reproduction is called fragmentation. Another type of asexual reproduction is called fragmentation. In this way, any one part grows in size. इस तरीके में जो पार्ट्स हैं, कोई भी एक पार्ट वो क्या करता है? वो ग्रो करता है साइज में. In this way, any one part grows in size. The grown part then breaks out. ये क्या करते हैं? ये जुड़े नहीं रहते बडिंग की तरह, बल्कि क्या होता है? ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. द ब्रोकन पार्ट देन डेवलप्स अ कंप्लीट बॉडी. फिर जो अलग जो टूट जाता है पार्ट वो खुद से कंप्लीट बॉडी होता है. द ब्रोकन पार्ट देन डेवलप्स अ कंप्लीट बॉडी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction requires a mother and a father. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत होती है एक माँ की और एक बाप की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अ मदर एंड अ फादर. अ बेबी इज बोर्न व्हेन देयर आर अ फादर एंड अ मदर. इट्स प्रोसेस इज डिफिकल्ट एंड स्लोअर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये स्लो होता है, मुश्किल होता है बनिस्बत किसके? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. Its process is difficult and slower than asexual reproduction. But the babies born from sexual reproduction are stronger than the ones born from asexual reproduction. लेकिन ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं
बनिस्बत किसके, जो asexual reproduction से होता है. But the babies born from they are more stronger than the ones born from asexual reproduction. The babies who have both the parents can move to a different location. वो बच्चे जो डिफरेंट पेरेंट्स के जरिए जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, वो किसी भी लोकेशन में जाकर एडजस्ट हो सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं. द बेबीज हु हैव बोथ द पेरेंट्स कैन मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन. दे कैन सर्वाइव इन अनदर एनवायरमेंट. किसी भी तरह के एनवायरमेंट में, किसी और तरह के एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन अनदर एनवायरमेंट्स. That's because their bodies have good qualities from both the parents. This makes them stronger than asexual babies. Sexual reproduction also takes place in plants. Plants के अंदर भी sexual reproduction होती है. Sexual reproduction also takes places in plants. The male plant only has flowers. The female plant has fruits. Look at these papaya trees. The male papaya tree will not have the fruit. जो मेल papaya tree है उसमें क्या नहीं है, उसमें fruit नहीं है. The male papaya tree will not have the fruit. It has flowers with pollens. The pollens are transferred to the female papaya tree. The female papaya tree will grow the fruits. और फिर जो female papaya tree होता है वो grow करता है किसको, fruits को. The female papaya tree will grow the fruits. The fruits will have the seeds. A new papaya plant will grow when we sow a seed found in fruit. अब ये नया जो पपाया प्लांट है ये कैसे ग्रो करता है, जब हम उसका बीज जो है वो क्या करते हैं, जो बीज हमें मिलता है उसको हम दोबारा से मिट्टी में दबा देते हैं. A new papaya plant will grow when we sow a seed found in fruit. Some plants have both male and female flowers. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल में और फीमेल दोनों में ही फ्लावर्स होते हैं. सम प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. स्क्वाश इज वन सच प्लांट. तो ऐसा जो प्लांट है वो कौन सा है, स्क्वाश. स्क्वाश इज वन सच प्लांट. द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. The male flower has a stamen in the middle. The female flower has a budding fruit at the bottom. जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टेमन होता है उसके दरमियान में, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक बडिंग होता है. द मेल फ्लावर हैज अ स्टेमन इन द मिडल. द फीमेल फ्लावर हैज अ बडिंग फ्रूट एट द बॉटम. A maize plant has male flower head on the top and female flower heads on the stem. The corn is part of the female flower. ये जो corn है ये किसका part है, ये किसका हिस्सा है, female flower का. The corn is part of the female flower. Now, life cycle. Living things have babies. The babies go through different stages. They grow, get old and then die. This is called the life cycle of a living thing. Let's study some life cycle. You can see the picture here. First देखें यहाँ पर egg है, then caterpillar है, larva है, then क्या है, pupa है, और उसके बाद एक adult butterfly और again egg. So this is the life cycle of a butterfly. A butterfly has both the parents. It means that a butterfly has a sexual reproduction. A female butterfly lays eggs underneath the leaves of a tree or a bush. A caterpillar hatches out the butterfly egg. The caterpillar eats the leaves of the plant and gets bigger. Then it creates a shell around it and hangs on the branch of the plant. This is called the pupa.
After some days, the pupa opens and a butterfly comes out. Now let's see the life cycle of a cockroach. तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें पहली जो पिक्चर है. The life cycle of a cockroach begins with the egg or teca containing eggs, then hatching. थर्ड पे क्या है? nymph. 4 पे भी nymph है, 5 पर भी nymph, 6 पर भी nymph, 7 nymph, and then adult cockroach. So now we are going to discuss about life cycle of a mosquito. This type of mosquito is called Aedes aegypti. तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके सामने इसकी पूरी एक पिक्चर है. इसमें भी सेम ऐसा ही. पहले क्या है? पहले एग्स हैं, देन लार्वा है, देन पापा है, देन एडल्ट मॉस्किटो है. द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. Now let's see the life cycle of a tomato plant. So from where we will start the life cycle? Look here. Here is a mature tree. Then उसके fruits हैं. उन fruits में से seed है. Then क्या होगा? वो sprout आता है. Then sapling है. Then small tree है. फिर दोबारा से mature tree है. ठीक है जी. Now all babies grow up to look like their parents. The babies born from one parent look exactly like their mother. But the babies who have two parents take features of both mother and father. But the babies who have two parents take features of both mother and father. यानी कि जो babies होते हैं, जो दो parents के होते हैं, उनमें दोनों parents के ही features होते हैं. Look at your hair, ears, tongue, hands, ears, teeth and feet carefully. आपने बहुत ध्यान से अपने बालों को, अपने टंग को, जबान को, अपने हैंड्स को, सब चीजों को बहुत केयरफुली देखना है. कंपेयर देम विद योर पेरेंट्स. whom do you look like? फिर आपने अपने पेरेंट्स के साथ कंपेयर करना है और फिर देखना है कि आप किससे ज्यादा मिलते हैं. कंपेयर देम विद योर पेरेंट्स. whom do you look like? You will notice that some of your body features are likely your mother and some are like your father. So this is our story of different life cycles of animals and plants. So what is your home assignment today? आपने इस स्टोरी में से जो जो अहम चीजें आपको लगी हैं वो आपने अपने फैमिली में, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पेरेंट्स को बताना है. और उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने कंपेयर करना है कि आप ज्यादा जो है वो अपने फादर से मिलते हैं या अपनी मदर से मिलते हैं, और आपने इसके बारे में खुद से कुछ बोलना है और बोलने के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और वो आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है. किसको? अपने टीचर्स को. सो इंशाल्लाह tomorrow we will do another activity. Allah Hafiz.